question arises that all it's all a good thing to have, but people when they get aged, these are natural things. After all, anything, any machine also has a tendency of wear and tear, right? And human body is also like a machine. कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर अभी ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द जॉइंट्स एंड मसल्स, कहीं ना कहीं फटीग, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन, मैनी थिंग्स, बिकॉज जब बॉडी नहीं मूव कर रही है तो ये प्रॉब्लम्स होना बड़ा स्वाभाविक है. और कहीं ना कहीं पता नहीं लगता, अभी तो यंग हैं इसलिए सब कुछ मैनेज हो जाता है, चल जाता है, बट धीरे धीरे दे बिकम क्रॉनिक इन नेचर. So maybe there are multiple topics I just reflected. Maybe you can answer one by one on all these. So first of all, you have said about degeneration. Yeah. So it's a natural phenomena जो हर एक के साथ होता है. एक मशीन भी wear and tear में जाती है. So as our joints, इसमें एक degeneration होना, it's a natural process. But nowadays we have seen कि जो degeneration 30 या 40 साल के बाद start होता था, in our patients we are seeing जो फ्रैक्चर्स 60 साल के लोगों को होते थे, आज वो 20 साल के बच्चों को और 16 साल के बच्चों को फ्रैक्चर्स हो रहे हैं. एंड ऑल द मैकेनिकल डिस्फंक्शंस दे आर हैविंग एट द वेरी अर्ली एंड यंग एज. द कॉज इज द लाइफस्टाइल, अगेन आई विल से, एंड द हैबिट्स व्हाट वी आर एक्वायरिंग नाउअडेज. So the most common reason of early degeneration what we are seeing in the patients nowadays, the way they are sitting, the way they are working, and their whole posture and lifestyle. Degeneration we are talking, जो कि पहले 25-30 एज में जाकर धीरे धीरे शुरू होती थी degeneration, it have been started earlier in early 20s also. So we can avoid this by looking after all these factors. And for our joints, water is very important because the ground substance of the cartilage in our joint, हमारे जो cartilage है उसका जो ground substance है उसमें water content बहुत ज़्यादा होता है. तो if we are not taking proper water or we are not hydrated, so we are increasing the chances of degeneration in our joints. So proper hydration is very important, movement is very important, and the type of exercises we are doing is very important to avoid early degeneration in our joint. Very, very beautifully said. I mean, in fact, there are many things which I'm sure, including me, we were not aware about. We end up doing mistakes